Hello friends. Aina matam khragi mamangda aigi Facebook live ta haizagibani sorry Facebook post ta hapjagibani akoigi how to become a pilot mayam daga haizagena aigi si mainly akoigi Manipur da harukliba chasing inausing chelsi mayam कोई पायलट पनिंग खर यौरमगनी खली अदबु करम गाइडेंस तौदना क्या लाइक पादना करम मखल की लाइक पादना क्वालिफिकेशन करी करी लेबगी हाइबदु कोई अप्रोच तो हम खंगदबदगी हाइबदि गाइडेंस तो हम खंगदबदगी हाइब कैरियर से चूज तौनिंग फावदा कोई चूज तो हम खंगदना तो कंगु यौरमगदराना खली मोई मखोई सिंदुगी इंटरेस्ट येंजरगा हाइब तारे अखोगी लेमेन्स तम पायलट अमजी कमाय करी करम हाइन तौदुना ओरप याबगे हाइबगी मरमदा वारी खर साजगे तौबनी अदो फेसबुक लाइव सिददी अखोगी तसेंगना अदुगी मरमदा सुगाइना ताकदुदी नुंगाइत्रे अदुना आइना सुम खजबदा आइना वीडियो अमा रिकॉर्ड तौजरे अदुगा यूट्यूब ता ओन अपलोड तौजरागे यूट्यूब टू द डिटेल यार बमकैना दुम खरा डिटेल ओना हाइजरबनी अदुदा येंबियु आइगी फेसबुक पेज दा दुम यूट्यूब लिंक टू शेयर तौजरगे रेडी होइबा मतंदा अदुगु ngasiगidi आइना टेंटकना हाइतारेको करी माइ तौगदबने दो हाइजरके अकोना पायलट हारगदी इंडिया दा generally two categories lay hai bitare. First is military pilot and second is civil pilot. Ado animaki daka leba educational qualification hai bitare gadi some hai bada yam na hai bigi daka laite minimum he has to be +2 have the class 12 pass tawgadabani अदुबु फिजिक्स एंड मैथ्स द मिनिमम 50% दगी है तारगदि मदु ओइबि यारो ग्रेजुएट वर्गसु काइदे ग्रेजुएट वर्गसु काइदे एनी ग्रेजुएशन फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन द कंट्री और वर्ल्ड यानी तवदबु +2 द फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स याउदबि यारो ओके फर्स्ट अखोइना मखाताना मिलिट्री पायलट कमाई ओइनी नत्रगा सिविल पायलट कमाई ओइनी ना हाइद्रगी ममांगसिदा चौराको कोई सिंपल ओवरव्यू हम खतंग पिजगे पायलट हारगा एरोप्लेन पाइब कांगू सिबुनी कोइना खंगदर दोइसे अदगा कोई नेविगेटर कसु लई फ्लाइट इंजीनियर्स लई मोदि तुवाना थमग्रजे ओनली सुपनगी एरोप्लेन पाइब एरोप्लेन थोब कांगू दुदा ना दुगो ngangnarasiko चौराकना इंडिया दा एक्टिव पायलट अब रिटायर्ड होग्रवा जो पायलट क्या approximately around yamde only about 25,000 sidagi panghen helo karigino habe matamda active pilot se armed forces ta around 12-13,000 leramani adigi that many civil leramani the military and civil सी तोंगान तो अनिजी आई कोना पुंजन जरके अदु हुजे हुजे किरे तोंगाना हाइजरके आई सी स्पेशली मिलिट्री ददी कॉन्फिडेंशियल ओय मरमना आइना चौराक चौराक अप्रोक्सीमेट हाइजके को एग्जैक्ट फिगर दी पंजर रोय इंडिया द मिलिट्री मैक्सिमम मिलिट्री एयरक्राफ्ट से एयरफोर्स की इंडियन एयरफोर्स की मखादले they have more than 500 aeroplanes. Okay, armed forces to hire gadi Indian Air Force, Indian Navy, and Indian Army. Sina defense like that. Armed forces category of sangak pata ragadi paramilitary forces su koi BSF tale aduga Indian Coast Guard tale. Indian Air Force tadi fighter aeroplane, transport aeroplane
helicopter aeroplane lay. Indian Navy dasu ahumak lay. Haibidi fighter, transport and helicopter. Adu Indian Army dadi supnagi helicopter lay. Sina military aeroplane sing lay kre. Sorry. Indian Coast Guard di both transport and helicopters lay. Aduga BSF tana only transport aeroplane lay. Aina transport hire gadi port se puba amasu passenger puba animak category ani si makap sangre. Adagidi civil aeroplane hire gadi. Samdak na hajar rakya. Biggest airlines is Indigo. Size matungina makha is SpiceJet. Third Air India. Fourth Go Air. Fifth Vistara. Sixth AirAsia. Makha tavdi TrueJet gaina lady. Adigidi High Star lady. To Flyboy namaz tholkadori. Smaito na these are the airlines. Airlines na taba atop aeroplane karai lay habida. Okay, all the corporate houses, Tatas, Birlas, Ambanis, where Reliance is. Then India Bulls, Kalyan Jewelries, higher above corporate housing je, mogi masa aeroplane, mangatuk loy lena bang aktani, mogi jo pilot am like re. Higher above Kangu sina corporate flying kawi, aduga airlines the pilot Kanguna airlines pilot kawi. Third category the namu chartered companies Kangu male, have the taxi company gumba, adegi bus company gumba, smaito dana aeroplane gisu koi chartered companies lay moju aeroplane koi business jets macha na the air ambulance gumba macha yam lady mu gisu pilot yam lady mathang da amo koi gi India da around 100 flying academies or flying clubs or flying institutions lay moi gisu around 10 to 15 pilots lay as instructors, most of them was moya amna aeroplane mangatu lay moisu aduna moigisu yam the flying institution among the around 15 maybe more pilots lay as instructors. So all together aduna ngasai civil and military punzilaga pun around 25,000 active pilots lay in India. Aduna akoina ngasai aviation as a career and choose tawdringa mamangda koi broad perspective mama koi yengasi akona engineer hai. There are lakhs of engineers in the country. Doctors hai, there are lakhs like civil service hai, IAS IPS hai, police, there are lakhs like even the politicians lakhs like businessmen lakhs like aduna any profession akona choose the matamda yamna lakhs like ngakani. But whereas in aviation pilots it's around just about 20-25,000 active pilots currently in India. Agar India ki population is going they are minuscule number atoba profession compared to just mogi 1-2% of their population mogi total strength pilots is very like kai aduga mi yam changa dismam kai hangba yaw question maybe awareness what natragana paisa yam chang yen khanba but they are not true. Pilot amu oge either military pilot oge natraga civil pilot oge hire gadi private doctor engineer tambadigi hena paisa changde tasena haragadi private doctor tamge haragadi I don't have to name it, depends upon from what institution you are getting your degree. Maybe just 1/3, half 1/3 of that money if you spend in aviation you can become a civil pilot. So it's not very costly. Then what? Then why people are not still choosing? Then maybe I told you awareness what? Okay. Natragana
yam boring chuba job lo sibo yam na risky o job lo natragana yam na pamna job lo no. Three things about pilot's profession. First, it has lots of glamour. Glamour quotient is very high. Second is adventure. If you love adventure, thrill, passion in life, you cannot get any of these things as much as you get it from here in aviation sector than any other sector, any other or professions. Third, monetary, paisa. Paisa yam phangdaba sector ane mayam na changadri sibo. No, wrong. If you talk about white money, not black money. If you talk of white money, there is no other sector which is as monetarily as beneficial as this sector is. So you have glamour, adventure and money. All three are there. But still people are not choosing. So I would like to advise all my brothers and sisters, aigi horkliba chasing nausing chelsing haitare moida awareness wapugumba ma warambasu yaina khali aduna ne aina ngasi Facebook sida ina live oina I am the khara su share tawse again to rise do taragadi money the adventure glamour everything lerega choose to drink maybe so I set awareness what adugi nine awareness du kitang dosu mayam da share to jege na ngasi mayam mama the camera I mobile mama da phami se ado detail dia ya high base din ngai tabani I Facebook I told you YouTube to upload to sir again I say adusu I broadly dia explain to jaramge I sahaje go military pilot or high targadi either you come from NDA or Naval Academy. Entrance exam is the same. Naval Academy ga NDA ga entrance exam is same ni UPSC na logni sahi na anirak tauni minimum qualification I told you should be class 12 pass with physics and maths minimum 50%. Adudagidi NDA da sanga matungda Air Force choose to you tawraga matungda 1 year amuk NDA 3 years sangani JNU gi makha da graduation tawgadabani adu makhada 1 year amu Air Force Academy Dundigal Hyderabad tam tawgani adu matung in the based on your performance vacancy in the Air Force and your own choice ahum sida based tawraga either fighter helicopter or transport choose to yagani adagidi amu NDA the or NDA the some of the Navy on Navy on chamatung same thing 3 years plus 1 more year in Naval Academy 4 years ki matungda naval sam to ana naval aviation ana dum khanbe se agani sine NDA 3 year same thing army the su another first 3 years in NDA then 1 more year in IMA then you get commission after 4 years of training then you get commission in the army then you can choose Army Aviation Corps AAC nama levini adu choose to you adu helicopter pilot oibe yagani sine NDA through oigre atoba inga sai have entrances ama higher mado Naval Academy and tongana Navy Academy mle aduna Goa dele INS Mandovi gobuni aduda sangaga aduda gi training torani again mo 4 years sangani 4 years loraba matungda Navy the commission tor matungda mo koigi administrative branch ni kano aviation je aviation cham yagani aduga Navy the same moi naval the fighter pilots lay transport pilot lay helicopter pilot lay okay ahum ji sam yagani sina military gi through I samdal sam hajar ke ko next armed forces ani wala ure enga sab kano ina have do Coast Guard and BSF have do Coast Guard and BSF to oigadi you have to have a minimum CPL adu BSF ti generally CPL ko gabani ATPL ko gani so ATPL or CPL pairaba matungda hybrid license city DGCA
Directorate General of Civil Aviation Government of India na piba license si paraba matungda changakpa yagani aduna hire ani sidi aina civil aviation on club tawjarage. Okay, now I finished the military pilot o hire tare ngasagi DGCA na issue to license to takali. Those licenses are not, the pilot license is not required. So adu na dakala ita maram oiduna ngasagi sima site pe thamgrasi. Now we'll come back to civil aviation. Civil aviation dadi qualification sa mane ngasabo bare minimum qualification is ngasagi 10+2 class 12 pass togadabani physics and maths ta adu graduate RCI post graduate RCI oiningbo OBI any graduate OBI tawadabu you have to have a license issued by DGCA, Directorate General of Civil Aviation, Government of India. So let's talk about this. How do you get this license and how do you go about it? First, licensee thage hai tar di exam manga tu pass to dabi yaroi exam ji thage hai tar gadi aina DGCA gi website ta changaga isan enroll togani enroll to have a layman's term the haragadi admit card loba roll number loba samani adubu aviation terminology dadi computer number apply togani computer number apply togani computer number apply to lots of documents are required adu detail the hajabi nuaitre am sangra. Okay, sigi DGCA gi computer number se phanga matung dagadi हायरवा एग्जाम जिंजे मथंग मथंग थाबा यागनी सही हमदा मरीरक एग्जाम तवी every 3 months कुदिंग एग्जाम तवी ऑनलाइन एग्जाम गाक्तनी हायरवा एग्जाम जिंजे सब्जेक्टिंग मेनली कोई रेडियो एंड नेविक्स नेविगेशन एयर रेगुलेशंस मेट्रोलॉजी अदगी टेक्निकल द हायगना अनी लई टेक्निकल दना टेक्निकल जनरल एंड टेक्निकल स्पेसिफिक technical specific haibadi aina paige doriba aeroplane dugi maramda technical knowledge exam ni similar adege de FRTO ama haibam julai sina ngasai gi CU DGC na issue to license ni tawdabu masigi license de gi wireless and telephony department of government India gi amana issue to ba license amale RTR haibam license amale hybrid art license para matung DGCA the FRTOL gi apply to gadawni RTR as kaino samlak na haibada koi gi mobile phone ko manate or aeroplane wari sana bisadi ki atmosphere sida koi electromagnetic wave sida koi gi transmit tawge hai taragadi you need to be qualified to transmit using electromagnetic spectrum medium this is not C transmit to yare haibagi qualification phangba certificate to adu government of India na p haiba license RTR license kawi sisu taka le kini hey FRTOL haiba du phangna bhana bada. So adagi di haiba exam me anje pass taro matung exam jing je amuk to loina pass tok de yadi haiba lete amam pass taro jani aina angamba capacity the prepare torga loimuk thage ji amatang thage joy tawdabu sahi am exam marirak tawni marirak sida amuku pass to di yare adu amuk pass to gragadi subject amam gi validity say 5 years ne 5 years 5 years ibu manung da license apply to hodabu ne 5 years ibu manung da license phangogdragadi papers into labs tawgini aduna yamna lubudi dinate adu matam ni sangini kaigino habda exam yam je pass tawna hono da yam kan honoragadi yam talented over satra kangu de amuk tole pass ho je ngam da kangu ni hanjan ta na che nhum chang na thar ju yani kasu kai di tawdabu nas high license man je pass to be ade exam man je pass to be ade exam ni pass ta ro matung da recognize flying academy or flying club amada chalaga minimum 200 hours paigada bani 200 hours si manung da 15 hours of the multi engine have the engine ani pame aeroplane ogeda bani atai 185 hours the single engine akoi thane gi low ida ka engine aeroplane ma sahai tare Cessna gaina le adum bada pyre su yai
ꯑꯗꯨꯒ ꯄꯨꯡ ꯆꯅꯤꯁꯤ ꯄꯥꯔꯕ ꯃꯇꯨꯡꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯗꯣꯀꯨꯃꯦꯟ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤ ꯁꯕꯃꯤꯠ ꯇꯧꯔꯒ ꯂꯥꯏꯁꯦꯟꯁ ꯐꯪꯉꯦ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯁꯤ ꯁꯤ ꯄꯤ ꯑꯦꯜ ꯀꯃꯔꯁꯤꯌꯦꯜ ꯄꯥꯏꯂꯠ ꯂꯥꯏꯁꯦꯟꯁ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯒꯤꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯁꯝꯅ ꯍꯥꯏꯔꯕꯗ ꯂꯥꯏꯁꯦꯟꯁ ꯍꯥꯏꯔꯒꯁꯨ ꯌꯥꯝꯈ꯭ꯔꯦ ꯂꯥꯏꯁꯦꯟꯁꯁꯦ ꯍꯧꯕꯗꯤ ꯍꯧꯅ एस पी एल है स्टूडेंट पायलट लाइसेंस है सी पाइद्रगदी नंग ngसाई 200 आवर्स पाइबी यारो अदिगिदी पी पी एल है कांगुस ले को इना केरा कुनबा मसागी एरोप्लेन ले जब इसाई कार रही समाई तो आई ना कुलदी पसा पाइदी इसाई एरोप्लेन ले सी है लेर थमलोरे अदो अदु पाइगे हाय तारगदी आई जु लाइसेंस पाइदबी यारो कोई गाड़ी की ड्राइविंग लाइसेंस ले रु समाइना हारेबा लाइसेंस तो पी पी एल कोई प्राइवेट पायलट लाइसेंस कोई मथंग एस पी एल लेरे मथंग कमर्शियल पायलट लाइसेंस है ना कमर्शियल एरोप्लेन पाइगे है तारगदी मिनिमम सी पी एल है दरकार लेरकनी सिना बियर मिनिमम सो सिदगी ऑन वरी साब हो यारे अदि मखा ताब ए टी पी एल है ले अदि एयरलाइंस इन कोई कैप्टन और कांगूसिना पाइब लाइसेंस से मोदी यामना खर एडवांस होइग्रे एक्सपीरियंस हम दरकार लेग्रे सिगिदी कोन वरी सासे एयरलाइंस द कैप्टन और कांगूसिदी मो ए टी पी एल लेबा नाकने कोई लेमेन तम्स है कोई पोस्ट ग्रेजुएशन की लोरगा पी एच डी तो वादू मनी सिविल एविएशन है लाइसेंस सिगीजु वारी सारोसी सी पी एल कंसेंट्रेट तौरगा सी पी एल से कमाई तौनी सो अगर हाजगीब नंबर 1 कंप्यूटर नंबर अप्लाई तौनी कंप्यूटर नंबर से डी जी सी ए की वेबसाइट संग एग्जाम रजिस्टर तौनी एग्जाम दू की फी याम नते लुपा 500 खतनी एग्जाम पेपर हम थागी अदु तौरगा एग्जाम थारगा पास तौरगा तौबदबु याम इंपोर्टेंट होबा मस लेहौरी मेडिकल्स हक्चांग कोई पायलट ओबी याई नत्र यादे हाबदगी अदुना क्लास 1 मेडिकल कौनी क्लास 1 मेडिकल स्ट्रेट वे तौबी यारोय क्लास 1 मेडिकल दी हाना क्लास 2 मेडिकल तौनी क्लास 2 मेडिकल सी तौरबा मतुंग मिनिमम 3 मंथ्स और क्लास 2 मेडिकल 2 years वैलिडिटी नहीं और मसी मनुंगदा क्लास 1 मेडिकल तौब दरकार ले क्लास 1 मेडिकल दी अदुना आइना पायलट ओगे हारगदी फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इन कंप्यूटर नंबर गैद अप्लाई तौद्रिगे ममांगदा आई हाइजो हारगदी फर्स्ट थिंग इज मसागी क्लास 1 मेडिकल तौथोपियो क्लास 1 मेडिकल कमाई तौगदे है द क्लास 1 मेडिकल जो इंडिया द सेंटर मंगा मुक्तनी लेगी से क्लास 1 मेडिकल तौब यारी से कोई FCME Delhi, IIM Bangalore, the 5 Air Force Hospital Jorat in East Haraga, civil, these are all Air Force Aktani, the civil the Haragana Apollo Hospital Chennai, Lalavati Hospital Mumbai, Ghaziabad 12 Air Force Hospital Yavani, and Manga Tux the Yani, High Mapam Sings the appointment Laraga, the Widabani. क्लास 1 मेडिकल से क्लास 1 मेडिकल सिदा मी खरा नदी खंग ए आई डी मिट्स वे यार नो सो मे क्लास 1 मेडिकल जे आर्म फोर्सेस के याम स्ट्रिक्ट होय अदुनाई सिदा मक यामना सुगाइन हाजर रो अदुबु सिविल की दी यामना स्ट्रिक्ट होय बनते मी खरा नदी आई अनु उपी पायलट ओपी यार होयना खनबसु लई नती पायलट कोई अनु उपग पायलट ओपी यादे हाबा द नती अदु मागी लिमिट लई ओके अदुना मेडिकल दी कोई नंबर 1 नामना रिजेक्ट तौगले से मेडिकल दी आई साइट कोई मोगी प्रिस्क्राइब लिमिट की वांग लानबा नंबर 1 अदगी नंबर 2 कोई अल्ट्रासाउंड कोई हुक की अल्ट्रासाउंड लोगनी अदसु कर रिजेक्ट तौगले अतै दी याम नॉर्मल याम जस्ट almost every 80-90% of this youngsters will be able to go through it. Maybe 90%, not much of a problem. Aduna kashu thoina tawdu aina suppose my invest, it's a heavy investment in terms of money and time invest tawga class the kona medical yaram de kala medical jahana higher mayam ji ngasai ki kana tawba exam thaw ko ki medical da kason lete मेडिकल फिटनेस दी दरकार लगते एक्चुअल एरोप्लेन पाइब हौरगे है मेडिकल की सर्टिफिकेट दरकार लेकिन दरकार लेरपगी वानी तबुतबु एफर्ट पैसा लाई थादरगा एग्जाम कहीं लोई पास तौरगा
पाइबा होगे काना याद्रे हारगदी मसागी आई एफर्ट सिंग दो मांगजने हाइबे वानी अदन फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट सिंग आई फिजिकली दी यारे हाइबे से मेडिकल हान तोथोपिरगा अदुगा म थामबियो अदुगा हयेंग कोई चही कुनु रिन्यू तोदसु हयेंग पाइरमदा रिन्यू तोबिर लोरे कसु काइदे अदुगा हाइबे मैम से आइना हाजिरिसे सम समबगदी कोई एविएशन एकेडमी में चंगदी मोइना दुम मसाना एक्सप्लेन तौबना मो एक्सप्लेन तौरगा मोइना दुम केयर लो हिगदबनी तौबदबु आइना एक्सपीरियंस सुंग लेतना फ्लाइंग एकेडमी द चंगनगा आई सिविल पायलट ओइनिंगे ना हाइरबु मतमदा इट्स गोइंग टू टेक लॉट्स ऑफ टाइम maybe 2-3 years will take time because you have no experience aduna ngasai flying academy sing de nana akoi ngasai haib formalities ma'am se हाइना दी मिनिमम 250 hours पाई रेडी ना एग्जाम था याद देगा ले रहे हुजिक दी अदो लास्ट फ्यू इयर्स अदो रिलैक्स हो रहे 0 hours है वदी if you don't have any flying experience zero experience or because you don't मसाई एग्जाम ताब को लो याने अदुना सम क्वाइदगी मतम सेव तो गदबा इजी जो ओगदबा ओरगदी मसाई फर्स्ट मेडिकल तो थोपा नंबर 2 कंप्यूटर नंबर लॉक थोपा अदुगा कंप्यूटर नंबर लॉर मतुन एग्जाम थाबा अद एग्जाम थाबा जे सिलेबस से खन्नेबा करिकम सल काय पादोइनो न को अद सिलेबस डीसी वेबसाइट लो यावबनी पीडीएफ फॉर्म दे यावबनी यू कैन डाउनलोड इट ओके अदु तवदबु टॉपिक्स आर वेरी ह्यूज वेरी वास्ट थंदना लाइक पारगा प्रखा थारगा पास तौबदी ख वादी वागनी formalized class join to academy join to natragadi to wudabu adugisu easy way out lay nasagi all over india da koi gi coaching center yam lay especially in delhi gi on exam period da national capital ni aduna ni hajiri se delhi da laga dwarka sector 7 sida lots of coaching centers are there मोई जनरली मोई 3 months की कोर्स हुई 3 months की कोर्स में यावबा अदगी मोने सु गाइड तौरनी एग्जाम हाउ टू गो अबाउट द पेरेंट एग्जाम 3 months की कोर्स यावरगा इसाना का पाजरगा अदगा हायर एग्जाम में पास होइरबा मेडिकल तोबिरबा मेडिकल से तोथोबिरबा अदि मतुंदा गिदी यू कैन चूज एनी फ्लाइंग एकेडमी करमना फई करमना फते यामना थीबे की दरकार लेते एक्सेप्ट फॉर 1 or 2 कोई top 10 सिनतना अतैदी मोर और लेस ऑल सेम तो सेम मार्कनी यो मिनिमम दी ngसगी 200 hours to पाइब खतनी इंडिया दा पायर्स अब्रोड पायर्स ल यूआई याय तौदबु अब्रोड प तौगे हायदरगदी अदुगी एडवांटेज डिसएडवांटेज खले अदुदी कोन सुगाना तकचगे याम सांग मत नोजरोय अदमाय तोरगा ngसगी केना से फ्लाइंग एकेडमी 200 hours पायरा मतुंदा एग्जाम पास हो सर्टिफिकेट मैम दुने आरटी एग्जाम की सर्टिफिकेट तुने अदी हाँ एग्जाम ले कोई इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट ले आई इंग्लिश लैंग्वेज दा आइना कम्युनिकेट तो बुंगमी हाइबकी अमल सर्टिफिकेट मसाम ले अदुमा अदगी पूर्ण फ्लाइंग आवर्स से 200 hours पायरे सिदा क्रॉस कंट्री अदु नाइट फ्लाइंग अदु इंस्ट्रूमेंट फ्लाइंग अदु मोगी डिटेल लेबिनी अदु दी फ्लाइंग एकेडमी विल टेक केयर ऑफ इट अदु मैम दु सबमिट करगा लाइसेंस पायर लाइसेंस फंगनी I think once you get a license, you are a pilot. Makagi thawak krai da photna ba kamai toba kari toba haibadi ngasigi topic sidadi manam chalan jararoi aduga ngasagi atopa armed forces ki disanga gana phabra military adagi civil pilot ki da direction mana phabra adagi pros kaino cons kaino अदगी मिलिट्री होम चंगना पैसा क्या संगदबा सिविल दे संगना पैसा क्या संगदबा अदगी करम एकेडमी ने ख्वादगी ना फबा अदगी करेंट इंडियन मार्केट ने कमाई तो हाइबन सिंग मैम ददी आई डिटेल कोना हाइजरगे इंटरेस्ट होब कांगू सिंगना आइगोन कांटेक्ट तौबिरो कसु कायदे आई अंगम मतिंग पांजगनी गाइड तौजगनी my only aim is I said just to give some guidance to all my brothers and sisters of Manipur who aspire to become a pilot and probably who has not chosen this
profession just because of lack of guidance awareness adugi guidance awareness bijagen tawune. I hope you enjoyed this. Have a nice day. Good day. Mathang damu thengnarase. Okay. Kasu kaide aduga I want the message sabiro aduga specific question leragasu dum I want the haibiro kasai I pizarake. Thank you.